Hello everyone, can you see me? Good afternoon and welcome to this session. But I can't see if people can see. Hmm. All right, let's wait for people to join in. Okay. Hi, Shruti. Good afternoon. It's neither morning nor afternoon. Sorry, nor evening. It is afternoon. कोई नहीं श्रुति कोई नहीं let's get started with the session. Okay, so we are going to be what are we going to be doing in this session? हम बहुत हमने देखा कि पिछले बार सेकंड सेट जो था एमएचसीटी का जो सेकंड सेट था उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था विच वाज अ सरप्राइज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो ये सरप्राइज इस बार ना मिले एंड बट बेसिकली क्वेश्चंस बहुत इजी थे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चंस बहुत इजी थे. ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन idiomatic expression, contextual meaning of words and so on and so forth. So कीपिंग दैट इन माइंड हम बहुत सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सिंपल पैसेजेस देखने वाले हैं. आई वांट यू टू रीड द पैसेज एंड देन वी विल बी गोइंग टू द क्वेश्चंस. ओके, लाइक आई सेड द क्वेश्चंस विल बी sort of simple. Okay, हम but I always believe in कि मेरे अगर लर्नर्स हैं तो वो प्रिपेयर करे फॉर द वर्स्ट सिनेरियो. ओके, सो probably one or two questions will be a little tough. Okay, that won't be asked in MHCT. लेकिन जैसे पिछले बार सरप्राइज मिल गया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया था सेकंड सेट में, वैसे इस बार भी सरप्राइज मिल सकता है कि यू कैन गेट क्वेश्चंस दैट आर स्लाइटली ट्रिकी. ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो इसीलिए कुछ कह नहीं सकते हैं एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. दैट्स व्हाई वी हैव आई हैव केप्ट वन और टू क्वेश्चंस व्हिच आर अ लिटिल ट्रिकी. ओके, सो फर्स्ट वाला जो पैसेज है, इतना ही बड़ा पैसेज लिया है हमने और इसके बेसिस पे हम वंस यू आर डन रीडिंग प्लीज टाइप ओवर. ओके, इसके बेसिस पे हम 7 क्वेश्चंस देखेंगे. So once you're done reading this passage, do let me know. या तो हम साथ ही साथ सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स सॉल्व दिस पैसेज. तो पैसेज पढ़ते हैं सबसे पहले.
स्पीशीज इगैलिटेरियनिज्म इज अब इगैलिटेरियनिज्म हमने पहले भी बहुत बार देखा है ये वर्ड. दिस इज अ buzzword these days. Please make sure that you know the meaning. Okay, so species egalitarianism is used to recognize the concept that all members of a species hold the same moral stance. Okay, तो बेसिकली इसको बताया गया है कि स्पीशीज इगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है. ओके, इस कॉन्सेप्ट किस चीज पे बेस्ड है? ये रिकॉग्नाइज करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं. व्हाट जस्ट हैपेंड? ओके, जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑल. व्हाट इज हैपनिंग? ओह गॉड. ओके, ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज होल्ड द सेम मॉरल स्टांस. ओके, जितने भी मेंबर्स है एक स्पीशीज के, उनका मॉरल स्टांस सेम होता है. मतलब अगर सब सोचते हैं कि ये गलत है, तो सारे पूरे उस स्पीशीज के सारे मेंबर सोचेंगे ये गलत है. एथिकल स्टैंडिंग इंटेल्स, एथिकल स्टैंडिंग के बारे में अब बता रहा है कि इसमें क्या होता है. एट द एक्चुअल लीस्ट कमांडिंग रिस्पेक्ट बिसाइड बीइंग समथिंग एडिशनल दैन अ थिंग. ओके, सो एथिकल स्टैंडिंग के हिसाब से क्या होता है कि एक्चुअल लीस्ट कमांडिंग रिस्पेक्ट एथिकल स्टैंडिंग के हिसाब से, अगर आप कमांड कर रहे हो रिस्पेक्ट, तो उसके साथ स्पीशीज कमांड भी करती है रिस्पेक्ट दैन जस्ट बीइंग अ थिंग. ओके, देयर आर मेनी रीजंस दैट ऑल स्पीशीज आर सपोज्ड टू हैव मॉरल स्टैंडिंग इवन इन द मोस्ट बेसिक सेंस, एंड देयर आर reasons why they are supposed to command the same level of respect if this is the case. The article summarizes critical answer to Paul Taylor's case for species equality and then explains why other species deserve our respect but not equal respect. People who accept species egalitarianism are more motivated by the intuitions that we should respect nature, but one does not have to be species egalitarian to respect the spectacles of the physical world. The article continues by inquiring whether species fairness can be reconciled through the environmental ethic of resource planning and management. So it is just talking about this article. Hi Tia, good afternoon. So this is just talking about species egalitarianism. तो किसी specific species के बारे में कि इनको respect ज्यादा चाहिए होता है, इनको respect कम चाहिए होता है. But it is also saying at the same time कि अगर आपको हम किसी species को अगर respect करते हैं, तो it is just because we respect nature in general, not specific to a species. Okay, so इन मॉरल स्टैंड पॉइंट ये हमारा फोकस है. ओके, सो द मॉरल व्यू पॉइंट के हिसाब से जनरली वी डोंट हैव टू स्टडी स्पीशीज इगैलिटेरियनिज्म टू अंडरस्टैंड कि किसी स्पीशीज को, किस स्पीशीज को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, किस स्पीशीज को हम कम रिस्पेक्ट देंगे. ओके, ऑलराइट. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज? ए, बी, सी और डी? Critiquing Paul Taylor case for species equality, advocating for species egalitarianism, exploring reasons for species moral standing, और डिस्कसिंग रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वीकेस्ट लिंक को हटाते हैं. राइट, वी स्टार्ट एलिमिनेटिंग बाय वीकेस्ट लिंक. ओके, सो वीकेस्ट लिंक इज ऑप्शन डी. डी विल डेफिनेटली नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लानिंग और मैनेजमेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. ओके, अब देखो, एक्सप्लोरिंग रीजंस फॉर स्पीशीज मॉरल स्टैंडिंग. स्पीशीज मॉरल स्टैंडिंग के बारे में इट इज नॉट the exact idea. It is talking about ethical standing. Okay, not species moral standing. Okay, देखो, एडवोकेटिंग फॉर स्पीशीज इगैलिटेरियन, इसके लिए एडवोकेट थोड़ी कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये जरूरी नहीं है. ओके, people who accept species egalitarian are more motivated by intuitions than we should respect nature, but one does not have to be species egalitarian to respect the spectacles of the physical world. So it is not advocating, उसके साइड से नहीं बोल रहा है कि ये क्या कह रहा है कि बेसिकली हमें
जरूरी नहीं कि हम अगर हम स्पीशीज इगैलिटेरियनिज्म पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि फिजिकल कि किसी स्पीशीज को रिस्पेक्ट देना रहता है. ओके, वी डोंट रियली नीड टू स्टडी इट. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. द आर्टिकल समराइजेस क्रिटिकल आंसर्स टू पॉल टेलर्स केस फॉर स्पीशीज इक्वालिटी एंड देन एक्सप्लेन्स व्हाई स्पीशीज डिजर्व आवर रिस्पेक्ट बट नॉट इक्वल रिस्पेक्ट. ओके, so it is critiquing Paul Taylor's case for species equality. All right. So alpha will be the correct answer for this one. Moving on to the second question. Like I said, only this passage is slightly tough. Baki humne sare easy questions hain. I promise you. Okay. Second question hai, why do people who accept species egalitarianism feel motivated according to the passage? अभी हमने ये लाइन पढ़ी है कि why do people who accept species egalitarianism feel motivated? देखो यहाँ पर are more motivated by the intuition that we should. Thanks, Tia. We should respect nature. देखो आपने क्लैट के लिए जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एलिट के लिए जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हो, उसके उसके कंपैरिजन में बहुत ही आसान होगा एमएचसीटी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड नॉट अ लॉट ऑफ रेफरेंस टू द पैसेज. ये एक एक्सेप्शन है. वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं दोज आर इजी. ओके, सो what will be the correct answer for this one? To command respect for nature. Okay, so to command respect for nature will be the correct answer. To critique Paul Taylor's view is not why do people who accept species. Okay, to advocate for resource planning and management again. To explore reasons for species moral standing again. Okay, so दो option already ridiculous है. All right, and B will not be the correct answer. Moving on to the third question. What is author's stance on species respect in the context of the article? ऑथर का क्या स्टांस है स्पीशीज को रिस्पेक्ट करने के हिसाब से, अगर हम इस आर्टिकल के बेसिस पे देखें तो? देखो यहाँ लिखा है ना ऑथर ने, that we should, okay, that we should respect nature, but one does not have to be species egalitarian to respect the spectacles of the world. Okay, so okay, यहाँ पर ये भी लिखा है the article summarizes critical answer to Paul Taylor's case for the species equality and then explains why. क्या एक्सप्लेन करता है? Why other species deserve our respect but not equal respect. Okay, so the correct answer will be all species. Sorry, what am I saying? Uh, other species deserve respect but not equal respect. All right. Thank you, Tia. That's a good thought. I also feel the same. That's why I have given this passage first and then I have put the easy ones. Okay, so two easy passages के बाद हम करेंगे. But yes, this is it is always better to start with tough things. Okay, so if you get a hang of tough things, पहले बहुत दिक्कत होगा, you won't feel interested in all that. लेकिन if you get a hang of tough things, then easy things, so it'll come on its own. Okay. What does the author inquire about towards the end of the passage? Okay, कि किस बारे में inquire करता है passage के end में author? What is the author inquiring at the end of the passage? Inquiring whether species fairness can be reconciled through the environmental ethics of resource planning and management. Okay, which is clearly given in option
whether species fairness can be reconciled through resource planning. Direct answer hai. Bravo will be the correct answer for this one. Okay, direct answer hai. All right, moving on to the fifth question. According to the passage, what motivates people to accept species egalitarianism? क्या मोटिवेट करता है पीपल को स्पीशीज egalitarianism? वेरी नाइस, ब्रावो टिया, यू आर एक्चुअली आंसरिंग. वाओ. वाओ. फिफ्थ. फिफ्थ का देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, people who people who accept species egalitarianism are more motivated by their intuitions that we should respect nature, that we should respect nature. So which one will be the correct option for this one? Vamos, vamos. Intuition. इंट्यूशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इंट्यूशन एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, दैट नेचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ वन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, व्हाट डज स्पेक्टिकल्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड रेफर टू? Spectacles of physical world. No problem, Tia, no problem. If we go back to the passage, यहाँ लिखा हुआ है ना, intuitions that we should respect nature, but one does not have to be species egalitarian to respect the spectacles of the physical world. ब्यूटी ऑफ नेचर को बेसिकली ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में बात किया गया है, राइट? सो दिस वन इज क्वाइट इजी, आई वांट यू टू आंसर इट. टिया जवाब देगी. Impressive and remarkable scenes in nature. Okay, it is talking about delta. Moving on to the seventh and the last question. According to the passage, what does egalitarianism mean in terms of species egalitarianism? Good job, Tia. Good job. Equal respect for all species. Egalitarianism कोई भी सेंस में यूज हुआ हो, it basically means treating something or someone with equal, treating everyone equal in that cluster or in that group. Okay, moving on to the second passage. Stress is a biopsychological phenomenon.
as its effect a person's physical well-being, emotional stability, and social interaction. Stress can also be explained by a myriad of biopsychological factors that contribute to its development, described by Serafino and Smith. First, stress is correlated with social support, which implies that increased social contacts lead to a decreased probability of stress. Second, a reduced sense of personal control is associated with increased stress. As people become unable to use thought process to take concrete actions to reduce the impact of stressors. Third, stress is modified by personality strengths, including hardiness, sense of coherence, optimism, resilience. Finally, type A behavior, which is associated with high level of competitiveness, time urgency, anger, and vigorous vocal style, also can contribute to overall stress. Thus, stress is a complex matter that should be addressed from different sides to understand its nature. Okay, so it is all talking about stress. Now tell me, what will be the correct answer for this one? The text is an example of a passage that is. ये बहुत आसान क्वेश्चन है इस पैसेज के लिए. I think only me and Tia are there. You and I, riding Harleys in Hawaii, I. Jula, Jula. नहीं टिया, देखो descriptive में it appeals to your five senses. Is it appealing to any of your five senses? Are you able to draw a picture of what is happening in the passage? No, it is just providing you information. तो informative है. Okay, it is simply providing you information कि stress क्या होता है, क्या क्या factors contribute करते हैं stress को, right? Right, so it is informative. Select the option that can be used as a title from the text. इस टेक्स्ट का टाइटल कौन सा सही बैठेगा? Which one will be the best title? No problem, Tia, but you should trust your instincts. That is there, but आपका instincts को justify भी करना चाहिए आपके. If it is not matching with your justification ना, तब आपके आंसर में discrepancy आ जाती, गलत हो जाता. Okay, अगर आपका पहला instinct सही है, तो उसको instinct को strong करो. Okay, strong कैसे करोगे? By backing it with reasons. Okay, so that's how instincts become stronger. Okay, it becomes stronger and better at accuracy. आपकी तभी improve होगी जब बस instinct पे आप नहीं भरोसा कर रहे हैं, या बस you're not just thinking again and again. Okay, so इन दोनों का combination होना चाहिए, that is reasoning. Okay, so make sure that you do that. So select the option that can be used as a title. What will be the correct answer? Biopsychological factors of stress. Okay, alpha will be the correct answer. Okay, biopsychological factors of stress, because it is constantly talking about how it is biopsychological. Okay, biopsychological phenomena, right? Yes, absolutely. So it is talking about biopsychological phenomena. Okay, another word for modifies in the context of the text is modifies का दूसरा word क्या होगा?
देखो, एडजस्ट इज नॉट मॉडिफाई, ओके? किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो क्या हम उस चीज को एडजस्ट कर रहे हैं? इफ यू आर मॉडिफाइंग फॉर एग्जाम्पल अ बाइक, ओके, अ मोटर बाइक, आर यू एडजस्टिंग द मोटर बाइक? नो। मॉडिफाई करना मतलब आप किसी चीज से उसको अफेक्ट करके, देखो यहाँ पर भी पैसेज में मॉडिफाई का दूसरा वर्ड पूछ रहा है जो दिया हुआ है पैसेज में, ओके? सो okay, stress, third, stress is modified by personality. So stress modify hota hai personality ke hisab se. Now if you put over here, stress is adjusts, changes, influences will be the correct answer, okay? Stress is influenced by personality, okay? Stress is modified ke jagah stressed is influenced, okay? All right, C will be the correct answer. Ninth one, which aspect of the text indicates that the writer is engaging with the readers? कौन से एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट से दिखता है हमें कि राइटर रीडर से इंगेज कर रहा है? By addressing the readers directly, okay? Moving on to the 10th question, the writer refers to personality strength. What screen is blurred? I think from my side, I don't think there is a problem. कोई नहीं टिया, that's okay, that's absolutely okay. All right, the writers refer to personality strength to highlight. Personality strength किस लिए use करता है writer? To highlight the impact of stress development, okay? Moving on to the last one. Moving on to the last one. Science is very important in society because it is through it that different discoveries are made. Scientific methods, for instance, are used to discover a medicine to cure different diseases and come up with innovations that improve the lives of human beings. In the field of medicine, scientists highly use animal experimentations. This involves the use of non human animals to perform experiments. This is a topic that has been controversial in my region. Some individuals support animal experimentation while others argue that it should not be practiced. Supporters of the practice argue that most medical achievements rely on the use of animals. Their argument, therefore, is based on the premise that the use of animals in medicine experiment is beneficial. On the other hand, individuals from animal welfare and animal right organization argue that it is a cruel process. The controversy surrounding animal experimentation is a serious concern that should be addressed by considering views from both sides. All right, this is the passage. Now, the 11th question is, in the sentence, support of the practice argue that most medicine achievements rely on the use of animals. Which part of speech is rely? Rely कौन सा part of speech है? Rely को क्या हम relied कर सकते हैं? Can we change it into relying? Yes, we can. Relied, relying, relies. Okay, all these forms we can change. That means it is definitely a verb. Okay, action word है. 12th question है, choose a synonym for the word controversial. Controversial का synonym क्या होगा? Yes. Controversial का synonym क्या होगा? Controversial, unquestionable, unsettled, unambiguous, and
Unambiguous. Unabashed. Unabashed. Something that is not settled, something that is causing a lot of um is a cause of a lot of chaos. Okay, so it is not something that is settled, so B will be the correct answer. Another word for achieve in the sentence, most medical achievements rely on the use of animals, is achieve का दूसरा word. Will it be fail? Will be the opposite of achieve. Surrender will also sort of opposite direction में जा रहा है. Deplete is also in opposite direction. So bravo will be the correct answer. Yes. Attain. 14th question. In the sentence, the controversy surrounding animal experimentation is a serious concern that should be addressed by considering views from both sides. What word could replace concern to maintain the meaning? इज अ सीरियस टॉपिक तो नहीं होगा, इज अ सीरियस कंट्रोवर्सी नहीं होगा, डिलेमा नहीं होगा, टॉपिक नहीं होगा, इश्यू हो गया. Okay, D will be the correct answer. Final question of today. Final question of today. What can be inferred from the passage regarding the controversy surrounding animal experimentation? उसके बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं पैसेज में, क्या समझ में आता है हमें पैसेज से कि कंट्रोवर्सी कैसा है? What are we talking about the controversy? So controversy has been resolved. तो resolved तो हुआ नहीं है. Author last में बोल रहा है कि दोनों साइड का views लेके हमें करना चाहिए. Animal welfare organization unanimously. So sorry, unanimously, unanimously support animal experimentation. Unanimously मतलब together, सब साथ में support करते हैं, सबका support आता है, which is not correct. Absolutely incorrect. Views on animal experimentation vary, leading to serious concerns. This looks like a very good answer. Animal experimentation is universally accepted. Again, it is saying accepted, so it cannot be the correct answer. So Charlie will be the correct answer. Absolutely correct. That's it for today. हम बस इतना ही आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. Remember, MHCT, if you are targeting MHCT, it is going to be not difficult at all. आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए vocabulary पे. You have to focus more on idioms and phrases, active and passive voice, because this is what generally comes. Okay, direct, indirect speech, active, passive voice, idioms and phrases, and vocabulary. Okay, apart from that, reading comprehension was available in the second second slot में था reading comprehension, which was also fairly easy. Okay, so we will come back with another set of reading comprehension if you need more practice. That's it for today. Thank you, Tia. I think Tia. It's Tia and me. So thank you. Bye bye. Take care.